किसी भी धर्म स्थान पे नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये अपवित्र होती है उस अवस्था में। How many men know about periods? आपको माहवारी बीमारी लगती है? आप बताओ। मेरे हिसाब से तो नहीं जाना चाहिए। Why not? मंदिर में भगवान बसे हुए हैं, वहाँ जाना ठीक नहीं है। तुम जो जब शुद्ध हो जाओ नहाने के बाद जब जा सकते हो। नरक शरीर रहता है तो कैसे जाएगा आदमी? जब सर्विस में कर सकती हैं लड़कियां, सर्विस में जाके बैठ सकती हैं एक दूसरे के पास में, तो मंदिर में जाने में क्या दिक्कत है? I think it'll take a long time to remove all the stigma. Around 50% of women aged 15 to 24 still use clothes for menstrual protection in India. I'm not saying this. These are National Family Health Survey 5 NFHS data which was released by the government in 2021. However, 64.5% of adolescent girls use sanitary napkins. Meanwhile, there is an overall increase of 78% of adolescent girls who use hygienic methods of protection during menstruation. मैडम जी मंदिर में जाना सही नहीं है। देखो क्यों कह जी ऐसा है, देखो मंदिर में भगवान बसे हुए हैं, वहाँ जाना ठीक नहीं है। तुम जो जब शुद्ध हो जाओ नहाने के बाद जब जा सकते हो, वो ठीक नहीं है। नहीं जाना चाहिए, मतलब उस चक्रों में कि नहाते धोता नहीं है कम आदमी, और फिर नरक शरीर रहता है तो कैसे जाएगा आदमी? मतलब अब वो गंदगी तो रहता है थोड़ा बहुत, इसलिए नहीं जा सकते। नहा धो के जा सकते हैं ना। Well, education plays a very important role in girls using sanitary pads and hygienic methods of protection during menstruation. The NFHS 5 data reveal that girls with higher than secondary levels of education are more than twice as likely to be using a hygienic method than girls without any educational level. The gap is 93% versus 43%. How many men know about periods? You're not taught about them exactly unless you're a biology student. I'm a biology student, so I was taught about them. But there's still so much stigma and so much misinformation about this. मेरे को क्या लगता है, मैं मतलब मेरे हिसाब से नहीं जाना चाहिए। बहुत से लोग पसंद करते हैं, बहुत से नहीं करते इस चीज़ को, कि वो खाना भी ना नहीं बनवाते उस टाइम में उससे। नहीं मैडम, जब बीमारी इतनी चल रही है तो कोरोना काल के अंदर कितनी तगड़ी बीमारी थी, तो सरकारों ने हमारे पर फैसले लिए ना। हम मंदिर मस्जिद तो हम अपने घर के अंदर भी पूछ सकते हैं। तो आपको लगता है कि महामारी और कोरोना एक ही है? मैडम वो भी है तो बीमारी दोनों। नहीं जाना चाहिए, मंदिर नहीं जाना चाहिए, किसी भी धर्म स्थान पे नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये अपवित्र होती है उस अवस्था में, जो पीरियड का अवस्था होता है जो महिलाओं की। मेरे हिसाब से तो नहीं जाना चाहिए। नहीं जाना चाहिए, आपको ऐसे क्यों लगता है? क्योंकि वो चीज़ ऐसी होती है कि मंदिर जाना तो खैर, और मंदिर और मस्जिद में तो महिला को जाना भी नहीं चाहिए। और ये जो टेम्पल्स में जाने की बात है तो मुझे बहुत ही ज़्यादा गंदा मिथ लगता है। ये तो कुछ नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि भगवान भी तो थे ना, उनमें भी तो लेडीज़ थी ना, तो आई डोंट थिंक सो कि ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। There is also a rural-urban divide. For example, only 73% of adolescent girls living in rural areas use hygienic methods of protection during menstruation. However, 90% of adolescent girls living in urban areas use hygienic protection methods during the menstrual cycle. I'm not exactly aware of it, but I think it's very less because it's expensive, to be honest. So it's not available to the most of the public, especially in rural areas. So I'll say about 70% of girls, adolescent girls, who are using sanitary napkins. I have my mother, my sister at home, and I don't feel they are so much open about the issue. और एक जैसे बहुत बड़ा मिथ ये भी है कि जैसे ब्रदर्स को नहीं बताना है, पापा को नहीं पता चलना चाहिए, ये बहुत गलत चीज़ है। तो मुझे लगता है अब ये भी चीज़ बहुत कम हो रही है, तो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग कि अब लोग बढ़ रहे हैं इस चीज़ को लेके आगे। The use of hygienic protection by adolescent girls differs by state also. For instance, Bihar has the lowest percentage of girls using a hygienic method of menstrual protection at 59%, Madhya Pradesh 61%, and Meghalaya at 65%. There are also some states and regions like Tamil Nadu, Telangana, Goa and Delhi where over 90% of adolescent girls use hygienic methods of protection during periods. अगर मेरी वाइफ मेरे लिए खाना बना रही है तो उसको मेरे हिसाब से जाना चाहिए, जहाँ तक मेरा अपना व्यू है। अगर भगवान को याद करना तो कहीं भी याद कर देते हैं, ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि मंदिर जाना चाहिए, लेकिन फिर भी उसको मंदिर के लिए अलाउ होना चाहिए। We two were the only female in a house, so it was not the case because then who will be cooking? So right. जब सर्विस में कर सकती हैं लड़कियां, सर्विस में जाके बैठ सकती हैं एक दूसरे के पास में, तो मंदिर में जाने में क्या दिक्कत है? The year 2020, the ramparts of Red Fort. Prime Minister Narendra Modi mentions the taboo and stigma around periods and menstruation.
However, a lot more has to be done to remove this and break the cycle. ये तो एक तरह का मुझे मिथ ही लगता है. इट्स अ बिगेस्ट मिथ जो आज भी कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा है. जो लोअर क्लास पीपल है वो फिर भी इस चीज़ को मानते हैं. I think it'll take a long time to remove all the stigma. As you've seen, whoever we've spoken to, man or woman, young or old, everyone has a different opinion and different idea of what is menstruation and what should be done during it. Let us know what you think.